अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा ये सेकंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम है और जैसे कि आप जानते हैं हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं 12 स्टेप्स ऑफ रिकवरी प्रोग्राम फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। और भावीन, फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे थे स्पॉन्सर्स जी, या आपने ऑल्सो वर्ड यूज किया था दोस्त जी। थोड़ा सा और बता सकते हैं आप इसके बारे में? जब आप पहली बड़ी मीटिंग अटेंड करेंगे और आपके स्टेप्स शुरुआत करेंगे, आपको एक स्पॉन्सर दिया जाएगा और समझो स्पॉन्सर शख्स दोस्त दिया जाएगा। उनका रोल होता है जो वो आपको सपोर्ट दीजिए मीटिंग के अलावा, और मीटिंग के आउटसाइड वो आपको सपोर्ट दे सकता है। वो औरत हो सकती है, मर्द हो सकता है, आपका जानी पहचानी हो सकता है, लेकिन नंबर वन क्राइटेरिया होता है जो भी आदमी और औरत स्पॉन्सर बने उनको खुद 12 स्टेप प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली जो भी आपका फ्रेंड यानी कि स्पॉन्सर हो, उन्होंने वो आप खुद कोर्स कंप्लीट किया होगा। सो इट डजंट मीन दैट नेसेसरी वो आपके आउटसाइड लाइफ में भी फ्रेंड्स हो। नहीं, इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस होना चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं कि नहीं आपका नजदीकी दोस्त नहीं हो सकता है। शायद ये भी नहीं रिक्वायरमेंट है जब उसी मीटिंग में वो स्पॉन्सर जाए, लेकिन नंबर वन रिक्वायरमेंट, पहला रिक्वायरमेंट है जब वो स्पॉन्सर जो दोस्त समझिए खुद 12 स्टेप प्रोग्राम कंप्लीट कर जाए, उनको अंडरस्टैंडिंग हो जो कैसा लगता है जब शराब या नशे की प्रॉब्लम हो और आपको सपोर्ट दे सके। बिकॉज मीटिंग तो शायद हामिद बात करेंगे मीटिंग की टाइम्स और तारीख, लेकिन क्या होता है जब 12 बजे रात को आपको शायद कोई प्रॉब्लम है, आप सोचते हैं हम हेरोइन इस्तेमाल कीजिए, शराब इस्तेमाल कीजिए, आप आपके स्पॉन्सर या दोस्त को टेलीफोन कर सकते हैं, वो आपको सपोर्ट देंगे। Mohammed? Yeah. Can you tell us a bit more about your organisation? In the first half you mentioned your telephone number and also your website address, which we'll have scrolling down at the bottom of the screen. But can you tell us a bit more about your organisation, and are you actually based in Birmingham? Yes, we are. We're based in Sparkbrook. We're based at 153 Stratford Road in Sparkbrook. We have an open access service, which is a drop-in service, so you don't need an appointment. You can just come in and pretty much get seen by drug workers straight away. We offer pretty much in terms of support straight away. Somebody can get an assessment done and go straight into a treatment program that's based on their needs. So we develop a care plan, a structured care plan that is developed around the individual's needs. So they might have a number of issues like housing or even assessment for mental health. So we provide an holistic service for that. Oh, so you're able to provide a wider support service than just the actual program? That's correct. Parveen and Mohammed both, can we speak a bit about females? जी, आप मुझे बता सकते हैं कि हमारी कम्युनिटी में थोड़ा सा ये पता नहीं टबू है या स्टिग्मा है या मिथ है, या लोग ये समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी में जो फीमेल्स हैं वो कोई अल्कोहल नहीं लेती या कोई ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन रिसर्च ये शो करती है और सर्विसेज को जो लोग एक्सेस करते हैं वो शो करते हैं कि ये फीमेल्स में भी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा आप बता सकते हैं इस बारे में? अक्सर फीमेल्स ट्रीटमेंट, औरतों ट्रीटमेंट में नहीं आती हैं, समझती हैं बेचती हैं, स्टिग्मा कम्युनिटी आप एक्सटेंडेड बेचती है, एक्सटेंडेड फैमिली को पता नहीं है। लेकिन जो हमारी रिसर्च है और जो औरतें हमारी सर्विसेज लाइक हॉस्टल या डोमेस्टिक वायलेंस इस्तेमाल करती हैं, उससे पता लगता है जो नंबर वन प्रॉब्लम है पाकिस्तानी औरतों में हेरोइन और शराब नंबर 2 प्रॉब्लम है। And heroin is a class A drug जी, और ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा फैलती जाती है। Now, can you tell us a bit more about the drugs issues within female community? Yes, certainly. What we're finding more and more, particularly with young girls, is the rise of cocaine use within the Pakistani community. And I think a lot of it's associated with maybe we're finding a lot of young guys have got girlfriends and partners where they go out and they pretty much get addicted to cocaine. We're finding that a lot of young girls are also experimenting with cannabis, which is a strand called skunk weed, which is quite well known out there now. It's used really widely, and so we're finding that also there's a big rise of that happening at the moment with women. And we do have within our organisation female practitioners that are qualified drugs workers that speak Urdu
and Punjabi. So if any women need help or support, they can access the drop-in as well. Or what a lot of the times our female support workers go out and meet young girls at colleges or universities because if they don't want to access a drop-in service because they might get seen coming in, our outreach workers go out and meet them in discreet places. Okay, going back to this point around sponsors and friends, these sponsors and friends that you have, are they available at any time? Because Parveen mentioned something like if you want to call them at 12 o'clock at midnight, they're available. Yeah, I mean just to add to what Parveen said in terms of these steps, I said earlier, the steps do have to be done in order in terms of 1 to 12. But once you've done the 12 steps, then you can apply any step during your recovery through that mutual aid program. So you can jump from any step to step after that, and that's what I meant earlier. But you have to apply them in order first. And to go in terms for support and why we offered the 12-step program locally, it was something that we felt there was a need for the community, and this is why we provided our building for these meetings to be held whenever anybody wanted them. So basically आपके लिए कि आपने recognize किया कि एक community में need है और उस need को आपने fill करने के लिए ये जो program है ये offer कर रहे हैं back into the community here in Birmingham. That's why we developed that program. But जो आप पूछ रही थी स्पॉन्सर की और टाइम मैंने कहा था 12 बजे रात को मैंने एक एग्जांपल दिया था. जब आपको स्पॉन्सर मिलेगा आप स्पॉन्सर के साथ डिस्कस करेगी किस वक्त वो टेलीफोन कर सकते हैं. ऑफ्टन जो स्पॉन्सर होते हैं ना वो कहते हैं हम 24 घंटे अवेलेबल हैं. अगर आपको रिस्क है जो आप इस्तेमाल करें ड्रग्स या फीम इस्तेमाल करें ना करें, इंस्टेंट उनको फोन करें वो सपोर्ट के लिए वो सपोर्ट. और ये जो स्पॉन्सर्स हैं ये फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ बैकग्राउंड्स, आर दे बाइलिंगुअल, दूसरी ज़बान बोल सकते हैं. अगर हमारे कुछ व्यूअर्स हैं मे बी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ये मैं मोहम्मद से पूछूं. Islamic program at 12 step, both sponsors and majority are Muslim already, and these are people who've been long term in addiction, and they've also done the program, so they know the program well, and they become sponsors to support newcomers. And you can have a sponsor for however long you want, and like Parveen said, a person who's new in the program can phone somebody who's been in the program a long time who's their sponsor at any time. They have that agreement between themselves. Mohammed, you've referred to in the program meetings. Can you tell us a bit about your meetings में क्या होता है? What happens in the meetings? How long are the meetings for? Who attends those meetings? And where are they held? The meetings can be attended by anyone that has an addiction issue, and they're held at the moment because it's quite new. The program is we're holding them at Kickit Pathway to Recovery building, so they're held every Sunday from 2 o'clock to 4 o'clock, and anybody can attend. It's definitely confidential, so we don't take people's names or any details, and pretty much it's at the moment the group is growing. So it's a group. It's not one-to-one नहीं है. एक group में आना पड़ता है. Mutual aid है. The mutual aid का मतलब है group work. One-to-one 12 steps recovery mutual aid program. One-to-one पे basis भी नहीं है. Often it's a group. Group work. तो mutual aid का कोई फायदा है? Is there anything that makes it being in a group better? Certainly जो म्यूचुअल एड 12 स्टेप प्रोग्राम है, जो मुस्लिम एड इस्लामिक 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम उसका एविडेंस बेस अब तक इस्तेमाल रिसर्च कंप्लीट पूरी नहीं हुई है. बट जो म्यूचुअल एड 12 स्टेप प्रोग्राम्स हैं लाइक AA, NA, स्मार्ट रिकवरी, उसके साथ पूरा सबूत है, एविडेंस बेस्ड, नाइस गाइडेंस भी है, इवैल्यूएटेड, ये प्रोग्राम इवैल्यूएटेड हुए हैं और सबूत हैं जो ये काम करते हैं, और often उनका सक्सेस रेट भी काफ़ी हाई है. Okay. In terms of the actual meetings, Mohammed, how many people is there roughly there, and is it mixed men and women? At the moment we've got around about 15 people attend, and sometimes it's 8, sometimes it changes variously, so it's not always one particular number.
and majority now is men, although we do have now a woman coming, and due to Islam the men have asked for separate groups. Yes. So yeah, are we looking at developing a separate female group? Yes, that's हमारी ख्वाहिश तो यही है जो फीमेल ओनली ग्रुप भी होनी चाहिए. yeah. And due to that, because now we're getting 1 or 2 women coming from the Muslim community, that's something now we have a project called Liberty, which is helping a group to develop. Hafeen, आपने ये बताया कि ये जो प्रोग्राम है, this is targeted particularly at the Muslim community. जी. हमारे व्यूअर्स शायद मुस्लिम कम्युनिटी से ना हो, दूसरी कम्युनिटी से भी हो सकते हैं. उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम है या कोई डेवलप होगा? Recently, एक आदमी ऑफिसर फ्रॉम पब्लिक हेल्थ विकी बंडाल, उसने सीख प्रोग्राम 12 स्टेप्स रिकवरी प्रोग्राम डेवलप किया है और इंडिया में टेस्ट भी किया है. हम उसकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट में पब्लिश करेंगे. सर अगर कोई हमारी सिख कम्युनिटी ये प्रोग्राम देख रही हैं वो एक्सेस कर सकते हैं. दूसरे रिलीजन्स के लिए पूरे बर्मिंघम में हर 7 days a week AA स्मार्ट ये मीटिंग्स होती रहती हैं अक्रॉस द सिटी. सो कोई भी हमारे मुसलमान बहना भाइयाँ भी वो एक्सेस कर सकते हैं. So वो जनरल है, कोई भी अटेंड कर सकता है. अगर उन्होंने ये स्पेसिफिकली मुस्लिम फेथ वाला नहीं करना तो दूसरे भी एक्सेस कर सकते हैं. दूसरे भी एक्सेस कर सकते हैं. In terms of the attendance on the program, Mohammed, can you tell us a bit about that? I know it's kicked off recently in Birmingham, but how many people have we had in total? Is there waiting lists? How soon can people access it? There's no waiting lists in terms of because it's meetings. It goes by meetings, so anybody can turn up. It's just a time and a location for service users or anybody that's got a substance misuse issue. That can come in and pretty much access the service. So anybody with an addiction issue, they will know there's a meeting happening on Stratford Road at a certain time, and they can just go. So it's there, ready, available for them. So उस ग्रुप मीटिंग में आप शेयर करते हैं. ये नेसेसरी नहीं जो आप पहली मीटिंग में आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, लेकिन ग्रुप का मतलब ये है जो आप आपका सब्सटेंस मिसयूज प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं. जो मेरी प्रॉब्लम शराब है, इसकी मैं आप बैठ के अपने बता सकते हैं. जी. और आप जब आपकी प्रॉब्लम किसी और के साथ शेयर करेंगे जो उनके भी प्रॉब्लम आपके सिमिलर हैं, फिर आप एक दूसरे को सपोर्ट दे सकते हैं ना. And they do say a problem shared is a problem halved. Exactly. Yes. So अगर वो प्रिंसिपल भी लें तो वो अगर किसी को बात बताओ या अपना इश्यू या प्रॉब्लम बताओ तो दिल से उतर जाती है. जी. Yeah, they call them in terms of rooms where they have the meetings. So when they describe it, they'll say in meeting rooms, and everybody in that room has pretty much had the same issues or similar issues around drugs and alcohol. So there are some people in that room that maybe been off drugs or alcohol for 10 years, 20 years, and there might be somebody who just walked into that meeting, and the group collectively support them, that individual. Yeah. So that's how mutual aid is worked. आपने काफ़ी इस प्रोग्राम के बारे में बताया और एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है कि आपका कोई पार्टनरशिप है किसी मस्जिद के साथ या किसी इमाम के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली फेथ बेस्ड है, कुरान पाक की फाउंडेशन पे ये प्रोग्राम बना हुआ है. सो डू वी हैव एनी पार्टनरशिप्स विद एनी मॉस्क्स और सेंटर्स और इमाम्स? हमारी ख्वाहिश तो यही है, लेकिन हम ही प्रोग्राम डिलीवर कर रहे हैं. Currently in Sparkbrook we have a number of mosques that have shown interest in the Islamic program, and we're really excited about it because we would like mutual aid to be everywhere and anywhere for anyone to access for help. And if it can be, a meeting can happen in a mosque, that's even beautiful because there will be all scholars there that know about Islam and that can help anyone. So that's currently we're working with a number of mosques. And it's early developments. And वो आपका program support करते हैं? जी, they're very happy that we're also spreading the word of Islam through support networks like Mutual Aid, and they're really pleased with it and they're welcoming it because they know it's another avenue also for young people. We know that a lot of young people within the Muslim community do have drugs and alcohol issues, and to try and get them going to a mosque or to try and get them on the way of Islam is sometimes very difficult. And if you have a program that can relate to some of their issues like drugs and alcohol that has Islamic principles to it,
young people get attached to it. Sometimes we're finding more and more than some other programs. Birmingham Central Mosque ने एक कमरा भी दिया था ना मीटिंग के लिए. Yes, we've got Birmingham अच्छा, Central. so actually Birmingham Central Mosque is on board. जी. Yeah. Birmingham Central Mosque, Green Lane Mosque is supporting Stratford Road Mosque as well. They're all pretty much now in the process of, we're talking to see if we can have more rooms and more days there to have meetings. So hopefully, inshallah, we're looking at trying to make this grow so that it can grow across all areas across Birmingham, Aston. अभी तो शुरुआत हुई है, इंशाल्लाह ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा और क्रॉस बर्मिंघम फैलने का. जो मैं पहले पार्ट का प्रोग्राम बताती थी, या सिर्फ इंग्लैंड में सिर्फ 2 मुस्लिम्स ट्रस्ट प्रोग्राम है, एक बर्मिंघम में, एक लंदन में. अभी यही मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन थी कि बर्मिंघम इतना बड़ा शहर है जी, और अगर ये रोल आउट करोगे, कब तक करोगे? ये कमीशन सर्विस नहीं है जो हमारे बस में है रोल आउट करने के लिए. इसका सक्सेस होगा जो जितने भी बंदे आ सकते हैं इन मीटिंग में, वो अपना वक्त वॉलंटियर करेंगे और मीटिंग फैलेंगे और स्पॉन्सर बनेंगे. ये हमारी ख्वाहिश और दुआ है. And my request would be to anybody out there that wants to help anybody with drug alcohol addiction. Anybody can set up a group, a 12-step Islamic group. All you need is pretty much is the steps and the information, and you can just hold a meeting anywhere. So any volunteers out there that would like to set up a meeting or a group within their mosques, I'll be more than happy to pass them the information and kind of give them the guidelines and principles to set this up. And are the volunteers or sponsors supported in any way? जी, जो ग्रुप नेटवर्क होता है, एक स्पॉन्सर दूसरे स्पॉन्सर को सपोर्ट देता है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक फुल सर्कल. एक दूसरे का आप एक कम्युनिटी बन जाते हैं और ये कम्युनिटी एक दूसरे का सहारा बनती है. Or Hamid, we mentioned the masjids, and the masjids are on board and there's rooms available. If somebody wanted to contact, can they contact those masjids that you've mentioned, or is it still best to come through your organisation and join that way? और वो इमाम के साथ बात कर सकते हैं जो आपने ग्रीन लेन मस्जिद, सेंट्रल मस्जिद, उनको डायरेक्ट उनके साथ बात कर सकते हैं अगर they feel comfortable, or should they come to you? They can go and ask the information from the mosque if they want. They can also come through us in terms of to provide them the information if there is a meeting happening there, because at the moment it's early in development, and if they are going to develop meetings to be held there, then that's something later on down the road. ये जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो सब्सटेंस मिसयूज या ड्रग्स या अल्कोहल ले रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा जी, एक प्रोग्राम को एक्सेस करने का. उनको आप किस तरह कंफर्टेबल मेक कर सकते हैं? मैं तो यही कहूँगी ये कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल है, किसी को नहीं पता लगेगा. जो आप ग्रुप मीटिंग अटेंड करेंगे, आपको स्पॉन्सर मिलेगा जो आपको सपोर्ट देगा. और अगर आपको उस ग्रुप मीटिंग में अपनी जाने पहचाने की कोई आदमी जो बंदे हैं, वो भी नहीं कह सकते जो मैं वो फलाने को देखा है इस मीटिंग में. कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल है. सो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही बड़ी पॉइंट है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है. और जैसे कि आपने पहले ये कहा कि सिर्फ अपना पहला नाम नहीं देना, सेकंड नाम देने की भी जरूरत नहीं है, एड्रेस देने की भी जरूरत नहीं है. That's right. अभी हमारे प्रोग्राम का खत्म होने का वक्त हो चुका है. कोई ऐसे फाइनल मैसेजेस हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे नाज़रीन को देना चाहती हो? मेरा फाइनल यही सुना है जो ये 12 स्टेप प्रोग्राम, चाहे इस्लामिक 12 स्टेप प्रोग्राम हो, AA हो, MA हो, स्मार्ट रिकवरी, इसका सबूत है जो ये काम करते हैं, और इंशाअल्लाह बर्मिंघम भी ये सक्सेसफुल होंगे. Mohammed, is there any final messages that you want to leave for our viewers? Yes, the Muslim Recovery Network 12-step program is available for anyone that wants to access help and support for their drug and alcohol addiction. You can access a meeting anytime. Just please contact us, and you can access the 12-step program. नाज़रीन, ये थे हमारे स्टूडियो के गेस्ट, परवीन मिर्ज़ा, हेड ऑफ पब्लिक हेल्थ कमिश्निंग, और मोहम्मद अशफाक जो है सर्विस मैनेजर फॉर किक इट पाथवेज टू रिकवरी. इन्होंने हमें बताया कि अगर आप बर्मिंघम में हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, आप ये 12 स्टेप का प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं.
इनका टेलीफोन नंबर और वेबसाइट एड्रेस दोनों स्क्रीन के नीचे मौजूद है। आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए अगर आपको या आपकी किसी भी फैमिली को अल्कोहल या ड्रग्स के बारे में कोई भी इश्यू है। ये इस्लामिक 12 स्टेप प्रोग्राम फॉर मुस्लिम कम्युनिटीज़ आपकी मदद कर सकते हैं। आज के लिए नसरीन की तरफ से अल्लाह हाफिज। आपको याद दिलाती जाऊं कि अगर आपने कोई ऐसी टॉपिक देखनी है इस प्रोग्राम में, यू कैन ईमेल मी ऑन healthmatters@thenurtv। अल्लाह हाफिज।